Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Bhajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Om Shrivad Paramaham Paribhaj Bhagwatam Ashto Tarasata Shishimat Abhaya Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai Nityalita Vishnu Ashto Tarasata Shishimat Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Prabhupada ki Jai Ananta Koti Vaishnava Mindi ki Jai Acharya Srila Haridas Thakur ki Jai Tat Goswami ki Jai Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasari Gaur Bhaktavinda ki Shri Radha Krishna Gopinath Samakunda Radha Kunde Giri Govardhan Vrindavan Dham ki Mathura Ram ki Navadvip Dham ki Mayapur Dham ki
जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ स्वामी की, श्रीमद बालादेवी श्रीमती सुभद्रा देवी की, गंगामाई की, यमुनामाई की, तुलसी देवी की, गोपी देवी की, समपत भक्तवृंद की, श्री हरिनाम संकीर्तन की, बृहद मृदंग की, जय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरि तुझे समति हरे कृष्ण। हरि तुझे समति हरे कृष्ण। हरि तुझे समति हरे कृष्ण। हरि श्री गुरु श्री गौरांग हरे कृष्ण। So first of all, I'd like to say it's a pleasure to be here again and get the association of all of the Vaishnavas who have taken shelter of the lotus feet of Jagannath Baladev Subhadra Devi. मैं अपना हर्ष व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से आप सभी भक्तों की संगति में आया हूँ जिन्होंने श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की शरण ग्रहण की है। And Srila Prabhupada. और श्रील प्रभुपाद जी की भी। So thank you very much for giving me this opportunity to perform some service. तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबने मुझे एक अवसर दिया है सेवा को करने का। Today we will read, speak about Madhvacarya and read one verse that's related to such a great acharya. आज हम श्रील मध्वाचार्य के विषय में चर्चा करेंगे और एक श्लोक भी पढ़ेंगे जो उनके विषय से संबंधित है। Actually, Srila Prabhupada very rarely on any appearance day spoke about that appearance day. और श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत ही कम है कि प्रभुपाद जी ने इस आविर्भाव के दिवस पे कुछ बोला हो। Even on 2 occasions on Janmashtami, he didn't even speak about Janmashtami. 2 बार ऐसा हुआ कि जन्माष्टमी के दिवस पर प्रभुपाद ने जन्माष्टमी के बारे में कुछ नहीं बोला। But somehow it's become a tradition that we speak about these great personalities, no? तो अब जैसे एक बन चुका है एक ट्रेडिशन कि हम इस महान आचार्य के विषय में बात करते हैं। Srila Prabhupada wanted to establish the sacred and sacrosanct position of the Bhagavad Gita and Srimad Bhagwatam. श्रील प्रभुपाद भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की जो पवित्र स्थिति है उसको स्थापित करना चाहते थे। So we'll read one very famous verse from the 13th chapter of the first canto. पहले स्कंद के 13वें अध्याय से एक श्लोक पढ़ेंगे। So this is first chapter, 1st canto, 13th chapter, text number 10. तो 10वां श्लोक है पहले स्कंद के 13वें अध्याय का 10वां श्लोक। भवद्भिदा भगवतास भवत्पिता भगवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदापिता स्वान्तस्थेन गदापृता भवद्भिदा भगवता भवद्भिदा भगवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदापिता स्वान्तस्थेन गदापृता भवद्भिदा भागवता भवद्भिदा भगवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता स्वान्तस्थेन गदापिता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। तात्पर्य, भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से
परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त हैं। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करे। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना चाहिए जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। भगवान सदा से ऐसे विशुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होती। वे भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि व्यास देव ने नारद से सुना था तथा और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। शुकदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवत की यही विधि है। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या है जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा हो, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह ना करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं कपितां येन भूतले स्वयं रूपकथायं ददाति स्वापतन्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So this purport has many very important points which we can understand also through the life of Madhvacarya. तो इस तात्पर्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो हम मध्वाचार्य के जीवन के साथ संबंध करके सीख सकते हैं। First of all, in the verse itself, it says that a great Mahabhagavata is just like a place of pilgrimage. जैसा कि श्लोक के अनुवाद में बताया गया कि एक जो महाभागवत है वो अपने आप में एक तीर्थ स्थान के समान होता है। In the Bhagwatam, it says Janeshvabhikyeshu Saiva Bhokara, that one should actually go to holy places, especially to get the association of great saintly persons. श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति तीर्थ स्थानों पर जाता है तो उसको विशेषता वहां पर जाकर शुद्ध भक्तों की संगति ग्रहण करनी चाहिए। Otherwise, if you're living in the concept that I am this body, which is it's just a bag of three elements. तो अगर आप इस मनोस्थिति में रहते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा नहीं, एक शरीर हूँ। If you think your family members are very special, अगर आप ये सोचते हैं मेरे परिवार के सदस्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, just like we all have a mother and father, we think they're very special. जैसे हम सबके माता पिता हैं, हम सोचते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। And we see someone else in the street and we think they're nobody. No. और हम किसी को अगर गली में चलता हुआ देखते हैं तो उनको सोचते हैं कि ये कोई भी नहीं हमारे लिए। But someone else thinks that person is my father or my mother, they're very special. तो वो जो व्यक्ति है वो किसी और के माता पिता हो सकते हैं और वो व्यक्ति उनके बारे में सोचता है कि वो मेरे माता पिता विशेष हैं। This is the relative world. ये एक द्वंद्व जगत है। But Chaitanya Mahaprabhu teaches us
manadena, that we say everyone is very special. तो चैतन्य महाप्रभु हमें क्या सिखाते हैं? मान न मान देना, हमें सभी को विशेष दर्जा देना है। My vamsa jivaloke jivabhuta sanatana. We see everyone as part and parcel of Krishna. तो हमें सबको, हम कैसे देखते हैं? सभी को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। Still, great Vaishnavas, Rupa Goswami says, among Vaishnavas, those who are bhajana vigyan, very absorbed totally in bhajan or worshiping Krishna, they should be worshipped. तो श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्तों के समाज में भी जो भजन विज्ञान है, जो भजन में श्रेष्ठ हैं, उनको स्पेशल, हमें उनकी उपासना करनी चाहिए। And therefore we worship great personalities like Madhvacarya and tomorrow Ramanujacharya. इसलिए हम ऐसे महान आचार्यों की उपासना करते हैं, जैसे कि मध्वाचार्य हैं और कल रामानुजाचार्य का भी दिवस है। So it actually says here, they turn places of pilgrimage, ordinary places into places of pilgrimage. ऐसा बताया गया कि वो साधारण स्थानों पर भी तीर्थ स्थानों में बदल देते हैं। Srila Prabhupada says something very interesting in relation to this at the end of his purport. तो श्रीला प्रभुपाद इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु देते हैं इस तात्पर्य के अंत में। He says this applies mostly to holy places which have been converted into unholy places. तो ये किसके संदर्भ में बोलते हैं? कि ऐसे पवित्र स्थान जो अभी अपवित्र बना दिए गए हैं, उसके संदर्भ में बोलते हैं। Shri Pundarik Vidyanidhi, when he would go to the Ganga, he would become very disturbed. पुंडरीक विद्यानिधि जब गंगा घाट पे जाते थे तो बहुत ही चिंतित हो जाते थे। He is the incarnation or the manifestation of Krishna. Yes. Krishna. Yes. So he is the father of Srimati Radharani. तो पुंडरीक विद्यानिधि कृष्ण लीला में राधा रानी के पिता हैं, वृषभानु हैं। And therefore the sentiment of Mahaprabhu is that he is my father. तो चैतन्य महाप्रभु इसका क्या भाव है? कि ये मेरे पिता है। So, but he was so respectful to the Ganga that he would not bathe in the Ganga. तो वृषभानु इतना सम्मान करते थे गंगा देवी का कि उसमें स्नान ही नहीं करते थे। Because he thought, how can I touch Ganga Devi with my feet? वो सोचते थे कि मैं गंगा देवी को अपने चरण से कैसे स्पर्श कर सकता हूँ। And he saw people washing their clothes and relieving themselves and then bathing in the Ganga, and that was very disturbing to him. तो वो क्या देख रहे थे कि लोग गंगा नदी में कपड़े धो रहे हैं और शौच जाने के बाद उसमें स्नान कर रहे हैं, तो वो चिंतित होते थे देखकर। Of course, Srila Prabhupada bathed in the Ganga, so did Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, so did Bhakti Vinod Thakur. अगर हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर या भक्ति ठाकुर ने सबने स्नान किया गंगा में। We cannot imitate such great personalities like Pundarika Vijayanidhi. We cannot imitate these personalities like. तो हम जैसे महान जो आचार्य हैं पुंडरीक विद्यानिधि, ऐसे व्यक्तियों की हम नकल नहीं कर सकते। But the point is that Srila Prabhupada is indicating that holy places become ordinary by the activities of ordinary persons. तो श्रील प्रभुपाद यहाँ इंगित करते हैं कि पवित्र स्थान अपवित्र हो जाते हैं जब यहाँ साधारण स्थान बन जाते हैं, जब कैसे साधारण लोगों के कार्यकलापों द्वारा। Just like the first time when I was a student, I went to Europe, and there's a very famous church called Notre Dame. So I went there, and I was very disappointed. तो महाराज बता रहे हैं, जब मैं एक छात्र था तो मैं यूरोप के टूर पे गया था, तो वहां पे मैं एक बहुत फेमस चर्च में गया था जिसका नाम था नोत्रे डेम, और वहां जाके बहुत परेशान हो गया। Because inside the church there were just a bunch of stands, people selling things inside the church. तो चर्च के अंदर कुछ ऐसे स्टॉल बने हुए थे जहाँ पे लोग चीजें बेच रहे थे। Of course, in our temples we have gift shops, no? आज हमारे मंदिरों में गिफ्ट शॉप है, But not in the temple room. No? पर टेम्पल रूम के अंदर नहीं है, बाहर है। So, but gift shop is to give people japa and prasadam and things that they need for their devotional life. No? तो जो ये गिफ्ट शॉप भी है, उसमें क्या मिलता है? बीड बैग है, जपमाला है, प्रसाद है, जो भक्तों को अपने भक्ति के लिए चाहिए। And also, if they're not so inclined to give a donation, at least we can extract one from them by business. No. तो अगर कोई व्यक्ति दान नहीं देना चाहता है तो एटलीस्ट इस प्रकार से बुक शॉप के माध्यम से या गिफ्ट शॉप के माध्यम से हम उनसे धन ले सकते हैं।
No, this even we know some of our alwars, they engage thieves in the service of the deity in Sri Rangam. No. तो श्रीरंगम में भी हम देखते हैं कि एक जो चोर थे उन्होंने भगवान की सेवा में जुड़े. People were not giving any donations, all these wealthy people. So some of his disciples were thieves. He said, so use your natural ability to bring in some donations by force. No. तो वहाँ पे बहुत कुछ अमीर व्यक्ति थे जो डोनेशन को दान नहीं देते थे. उनके कुछ शिष्य थे जो पहले चोर इत्यादि थे, तो उन्होंने कहा अपना जो आपके अंदर टैलेंट है उसका उपयोग करें और कुछ धन लेकर आए. Of course, we definitely cannot imitate that. No. हम इसकी बिल्कुल भी नकल नहीं करना चाहिए हमें. Only a very empowered personality can do something like that. ऐसे कोई महान आचार्य जो विशेष व्यक्ति होते वही कर सकते हैं ऐसा. So, at the time of Madhvacarya, the Shankaracharya's philosophy had spread all over India, which was still infected by the philosophy of Buddhism. तो उस समय मध्वाचार्य जब प्रकट हुए थे तो पूरे भारत में शंकराचार्य का मायावाद फैला हुआ था और थोड़ा सा बुद्धिज्म भी उस समय था. He was born in a Vaishnava family. His father was Narayan Bhatta. तो वो एक वैष्णव परिवार में जन्म लिए थे जिनके पिता का नाम था नारायण भट्ट. And he gave him, at birth, he gave him the name Vasudev. तो जन्म के समय उनका जो नाम दिया गया था वो था वसुदेव. So when he went to school, his teacher was teaching many Vedic principles, but he always noticed that Madhvacharya was playing with his friends. He wasn't studying. तो जब वो स्कूल जाते थे तो उनके टीचर कई प्रकार के शास्त्रों से कुछ चीजें पढ़ाते थे, लेकिन आचार्य उनके टीचर ने क्या देखा कि मध्वाचार्य सारा दिन खेलते रहते थे बच्चों के साथ, पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी. So he called him one day and he said, why don't you pay attention to these studies? This is very important. तो अध्यापक ने एक दिन बुलाया और मध्वाचार्य को कहा कि तुम ध्यान नहीं देते पढ़ने में, ये बहुत महत्वपूर्ण है सब कुछ. He was only, like 6-7 years old. उस समय वो 6-7 साल के थे सिर्फ. And he expounded total philosophy that the teacher had been given, and even more, that the teacher things that the teacher didn't even know. तो उस समय मध्वाचार्य ने अध्यापक को सब कुछ सुना दिया जो अध्यापक ने पढ़ाया था, और उसके अलावा भी जो नहीं पढ़ाया था वो भी बता दिया, और ऐसा भी बताया जो अध्यापक जानते नहीं थे. Just like Mahaprabhu with Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma was speaking and there's no questions, no response. What's wrong? तो ऐसे हम देख सकते हैं ऐसा ही एक पास टाइम की जब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बता रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु कोई रिस्पांस नहीं करते, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे. And Mahaprabhu said, I understand Vedanta perfectly. I just don't understand your explanation. तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे वेदांत अच्छे से समझ आता है, लेकिन जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो मुझे समझ नहीं आ रही. So when everyone saw his extraordinary qualities, he took his initiation when he was his sacred thread initiation, Upanayam, when he was 8 years old. तो 8 साल की एज में ही मध्वाचार्य ने उपनयन धारण किया, मींस ब्राह्मण दीक्षा हो गई उनकी. And soon after that, he came in front of his father and he had a stick in his hand. तो उसके तुरंत बाद वो अपने पिता के सामने आए, उनके हाथ में दंड था. And he said, my dear father, I want to declare there is so much Maya and the Mayavad philosophy and Buddhist philosophy. I will dedicate my life to defeating all of these things and establishing the worship of Krishna and Vishnu. तो अपने पिता को बोलते हैं कि संसार में बहुत माया है, मायावाद का प्रचार है, बुद्धिज्म का प्रचार है, तो मैं दोबारा से विष्णु की भक्ति और भगवान की भक्ति को स्थापना करना चाहता हूँ. And his father said, just as it is impossible for that stick to become a tree, it is impossible for a young boy like you to do such a great thing. तो उसके पिता ने कहा कि जैसे ये दंड तुमने हाथ में पकड़ा है, जैसे इस दंड के लिए वृक्ष बन पाना जितना संभव है उतना ही संभव तुम्हारे लिए है इस अवस्था में इस तरह की बात करना. And then Madhvacharya took the stick and stuck it in the ground, and it became a huge banyan tree, which is still there. तो मध्वाचार्य ने उस दंड को जमीन में ऐसे गाड़ दिया और सामने ही वो एक बड़ा अश्वत्थ का वृक्ष बन गया, वो आज भी वहां पर है.
He said, by the potency of the Lord, anything is possible. We should never doubt the potency of the Lord. तो मध्वाचार्य ने कहा कि भगवान की शक्ति के माध्यम से कुछ भी संभव है, हमें भगवान की शक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए। So by the same potency that this tree has manifested, I also, by the grace of the Lord, can accomplish His mission. तो जैसे भगवान की कृपा से ये दंड एक पेड़ बन गया है, उसी प्रकार से भगवान की कृपा से मैं इस मिशन को पूरा करूंगा। Just as it says in Srila Prabhupada is explaining that in this purport, that a devotee is like the connection of the electric current coming from the powerhouse to the outlet. The powerhouse is Krishna and the devotee is the outlet. तो श्रील प्रभुपाद जैसे तात्पर्य में बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जो भक्त है वो एक स्विच बोर्ड के समान है और कृष्ण क्या है, बिजली का पावर हाउस है और वहां से बिजली आती है, और जो भक्त है वो एक आउटलेट सॉकेट के समान है, आउटलेट के समान। So Madhvacarya had to have certain mystical powers. तो मध्वाचार्य के पास कुछ ऐसी यौगिक शक्तियां थी। Both he and Ramanujacharya displayed some vibhutis, some special shaktis of mystic power. तो आप देख सकते हैं मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य दोनों ने ही कुछ महत्व ऐसे स्पेशल विशेष शक्तियां प्रकट की थी। They did this because they were so infected. The whole world was so infected by atheistic philosophy. उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वो देख रहे थे कि पूरा संसार एक नास्तिकवाद से ग्रस्त हो चुका था। Of course, nowadays we have even a greater challenge. How much more infected now is the world with Mayavad philosophy, sense gratification? तो अगर हम आज के समय में देखें तो हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मायावाद फैल चुका है, क्योंकि इन भौतिकतावाद फैल चुका है। So this is our challenge, and it may seem impossible. ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि लगता है कि असंभव है। It's like we're going out every day distributing books and Harinam and Pravachar, but not that many people are coming. तो हम रोज पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, हरिनाम के लिए जाते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, तो लगता है कि बहुत सारे लोग जुड़ नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। Even though, just like in Vrindavan, so many devotees come to our temple. जैसे वृंदावन में कितने सारे भक्त मंदिर में आते हैं, लोग आते हैं। But you go to Prem Mandir, there are 10 times more people coming. तो अगर आप प्रेम मंदिर में जाओ, आपको 10 गुना ज्यादा लोग मिलेंगे। And there's nothing there. और वहाँ है कुछ नहीं। Just Sahajya philosophy. वो एक सहजीय सिद्धांत है। So, this is the challenge in Kali Yuga. It may seem impossible. तो कलयुग में यही एक चैलेंज है कि देखने में यह संभव लगता है। Just like one devotee told Srila Prabhupada, this is in the very beginning of the movement. It seems almost impossible to follow these 4 regulative principles. तो इस ISKCON के शुरुआती दिनों में एक डिसाइपल ने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद ये 4 नियम पालन करना बहुत असंभव सा प्रतीत होता है। And Prabhupada said, yes, in Kali Yuga it is impossible. तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, कलयुग में ये एक असंभव कार्य है। So some devotees who were not so strict, they thought, oh, jai Prabhupada. तो जो भक्त थोड़े सीरियस नहीं थे, उन्होंने कहा जय प्रभुपाद, अच्छी बात है। And then Prabhupada said, but by the mercy of Mahaprabhu, the impossible becomes possible. और प्रभुपाद ने कहा लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से असंभव संभव हो सकता है। So we have to have full faith in the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा में। Just like here we have Jagannath, Baladev, Subhadra Devi. जैसे यहाँ पर हमारे पास जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी हैं। And before the time of Mahaprabhu, no one understood their full identity, their internal identity. और चैतन्य महाप्रभु से पहले जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का जो स्पेशल व्यक्तित्व है कोई नहीं जान पाया था। A few devotees understood, like Jayadev, Goswami, few, but practically no one understood. They were simply understood the background of Jagannath from King Indradumna. तो बहुत कुछ चुनिंदा भक्त थे जो जगन्नाथ जी की महिमा को जानते थे, जैसे जयदेव गोस्वामी, पर ज्यादातर लोग यही सोचते थे उनका जो जगन्नाथ जी का कनेक्शन है वो इंद्रदुम्न महाराज की स्टोरी के साथ है। But Mahaprabhu revealed the intimate understanding of the forms of Jagannath, which even Indradumna Maharaj could not understand.
तो जो इंद्रद्युम्न महाराज नहीं समझ पाए थे, वो ऐसे अंतरंग महिमा जगन्नाथ जी की वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट की। Chaitanya Mahaprabhu revealed Vrindavan. चैतन्य महाप्रभु ने वह वृंदावन प्रकट किया। He also explained that the Gopi Bhava and Manjari Bhava, which had never been fully understood previously. तो चैतन्य महाप्रभु ने गोपी भाव मंजरी भाव को समझाया जो पहले किसी ने नहीं प्रकट किया। He revealed the nature, the eternal nature of Navadvip. तो चैतन्य महाप्रभु ने जो वास्तविक नेचर है नवद्वीप धाम की उसके विषय में बताया। He brought the chanting of the holy name for everyone to practice, and empowered it with special mercy. तो चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र को जप को इंट्रोड्यूस किया और पहले उसकी स्पेशल कृपा के बारे में बताया। So why will he not empower us to take his message to everyone, everywhere? तो चैतन्य महाप्रभु हमें क्यों नहीं शक्ति देंगे कि हम इस संदेश को हर व्यक्ति के पास ले जा सकें? He instructed us to do so. चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है करने के लिए। Everyone must be guru, and whatever they know about Krishna, you have to share it with others. तो सभी को गुरु बनना चाहिए और जो भी आपको ज्ञान है कृष्ण के बारे में दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। So there's only one reason why he won't empower us. एक ही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु हमें शक्ति नहीं देंगे। Because we don't want to be empowered. क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, यही कारण। One time, Srila Prabhupada in New Mayapur, he asked the devotees, so why do you think Krishna consciousness is so difficult? तो एक बार श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों से पूछा न्यू मायापुर में कि आपको ऐसा क्या लगता है कि जो कृष्ण भावना भावित है बहुत मुश्किल है? One devotee said, "Oh, Maya Prabhupada." तो एक भक्त ने कहा प्रभुपाद माया। Prabhupada said, "No." प्रभुपाद ने कहा नहीं। Another devotee said, "Oh, material Kali Yuga, Prabhupada." No. तो एक भक्त ने कहा प्रभुपाद कलयुग। Prabhupada said, "No." प्रभुपाद ने कहा नहीं। They offered many explanations. तो हर एक ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया, बताया। And then one devotee very innocently just said, "Prabhupada, because we don't want to be Krishna conscious." तो एक भक्त ने बड़े सरलता से बोला कि प्रभुपाद जी क्योंकि हम भक्त कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहते। Prabhupada said, "That is the reason." तो प्रभुपाद ने कहा यही कारण है। Otherwise, there is no difficulty. प्रभुपाद ने कहा अदरवाइज और कोई मुश्किल नहीं है। So Mahaprabhu's mercy, Krishna's mercy in the form of Bhagavad Gita, it is all being rained upon us like a monsoon rain. जैसे मानसून की बारिश होती है उसी प्रकार से भगवान की कृपा श्रीमद् भगवद गीता भागवतों के माध्यम से हमारे ऊपर गिर रही है। And the only problem is we have an umbrella called ahankar. लेकिन एक ही प्रॉब्लम, हमने सबने एक छाता ले रखा है अहंकार का। And we don't allow that mercy to rain upon us fully. तो उस छाते की वजह से वो जो कृपा है हमारे ऊपर नहीं गिर रही है, गिरने नहीं देना चाह रहे। So going back to our purport here, oops, I lost somehow or another. The page is flipped. 1 second. So Srila Prabhupada makes the point that we should not simply go to some holy places just to bathe. श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि किसी पवित्र स्थान पे इस कारण से नहीं जाना चाहिए, क्या सिर्फ नहाने के लिए। So Madhvacarya, he established Udupi and many other places as holy places of worship. तो मध्वाचार्य ने उडुपी और कई और महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने स्थापित किए जो भगवान की जहाँ पे सेवा हो सके, उपासना हो सके। He detected soon after he manifested his spiritual potency, his father was thinking, "Oh, he will never want to be married. Therefore, we should get him married quickly." तो जब मध्वाचार्य ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया तो उनके पिता समझ गए कि अब ये शादी नहीं करेगा तो हमें जल्दी से इसकी शादी कर देनी चाहिए। This also happened to Mahaprabhu. His father was thinking that if he learns too much, he will take sannyas.
तो ये चैतन्य महाप्रभु के साथ भी हुआ। उनके पिता ने सोचा कि अगर ये ज्यादा पढ़ाई कर लेगा तो ये संन्यास ले लेगा। Of course, we've already proven that this is not the case. No. तो हम ये देख चुके हैं, लेकिन इस कारण से नहीं हुआ था ये। We have so many shastras, but still people are getting married. No. हमारे पास इतने शास्त्र हैं, फिर भी लोग विवाह कर रहे हैं। One time, Srila Prabhupada, one devotee said, Srila Prabhupada, you said every man should be a brahmachari and every woman should get married. No. तो एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आपने कहा है कि हर पुरुष को ब्रह्मचारी रहना चाहिए और हर महिला को विवाह करना चाहिए। And so he said, Prabhupada, how does this work out mathematically? प्रभुपाद से पूछा कि इसका गणित कैसे काम करेगा, कैसे होगा? It's Prabhupada said, Krishna is the supreme mystic. प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण योगेश्वर है। If I preach renunciation, some people will take it, a few, no. तो अगर प्रभुपाद कहते हैं अगर मैं ये renunciation त्याग भावना का प्रचार करूंगा तो कुछ लोग इसको ग्रहण करेंगे। If I preach pravritti marg, no one will renounce. No. अगर मैं प्रवृत्ति मार्ग का प्रचार करूंगा तो कोई भी व्यक्ति संन्यास नहीं लेगा। Just like there are so many big gurus in India who just tell people, you just do this and that, everything is okay, you'll be saved. No. जैसे यहाँ कोई तथागत जो गुरु हैं भारत में, वो लोग कहते हैं कुछ भी करें, कुछ भी करते रहिए होगा। And they have millions of followers. उनके लाखों उनके शिष्य हैं। And millions and millions and millions of rupees. No. लाखों 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 रुपए। But no one understands Bhagavad Gita. किसी को भगवद गीता नहीं समझ आ रहा। So what is the use? क्या फायदा है? Srila Prabhupada said one time, if I did not teach these 4 principles, I would have millions of disciples. प्रभुपाद जी ने बोलते हैं कि मैं 4 नियम नहीं पढ़ाता तो मेरे लाखों लाखों फॉलोअर्स। Everybody likes kirtan and prasadam. सबको कीर्तन और प्रसाद अच्छा लगता है। Just like when I was on first Padayatra in Andhra and Orissa and Bengal, we saw so many kirtan groups. No? But many times I could smell alcohol on their breath. No? So they were having a so-called ecstatic kirtan. No? But the ecstasy of wine. No. So Ramanuja could see that he was thinking, maybe I should take permission from my parents but they will never give me permission to take sannyas. No. I'm sorry, Madhvacarya. Madhvacarya sannyas लेना चाहते तो उनको ये भी पता था कि अगर मैं माता पिता की आज्ञा मांगूंगा तो मुझे आज्ञा नहीं मिलेगी। So he decided, let me just do it. No. उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं संन्यास ले लेता हूँ। Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains in relation to this, explaining about Madhvacarya. भक्तिसिद्धांत ठाकुर मध्वाचार्य के संबंध में एक बात समझाते हैं। That in this material world, everyone wants sense gratification. No one wants to worship Krishna. इस भौतिक जगत में सब लोग इंद्र तृप्ति चाहते हैं, कोई भी कृष्ण की उपासना नहीं करना चाहता। Therefore, this tradition of ignoring the Lord and pleasing the senses comes from father to son and husband to wife and brother to sister and grandfather to otherwise everyone is passing down this tradition of sense gratification. तो ये इंद्र तृप्ति का जो व्यवहार है वो कहाँ से आ रहा है? पिता से पुत्र से उसके आगे पुत्र से भाई से बहन को माता से पुत्री को इस तरह से चलता आ रहा है। It's very difficult to break away from this. इससे इस ट्रेडिशंस को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। And when we preach the glories of the Lord, so much resistance. और जब हम भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं तो बहुत सारा अवरोध मिलता है। Even from other religions, no, they think, oh, this is not our religion; it's condemned. No. तो दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं वो भी हमें निंदा करते हैं हमारी कि ये हमारा धर्म नहीं है। So he went and took sannyas. मध्वाचार्य गए उन्होंने संन्यास लिया। And he became such a powerful sannyasi, preaching, defeating Mayavad philosophy, that people were totally amazed at his abilities. वो इतने शक्तिशाली सन्यासी थे
कि उनका सब लोग देखकर हैरान थे कैसे मायावाद को परास्त कर रहे थे। Just like it says here, he went to the holy place of Bhadarikashram 2 times. और कुछ काफी बार वो बद्रिका आश्रम भी गए, वहाँ बद्रीनाथ आश्रम। And the first time he went, he went with a few disciples. तो पहली बार जब वो गए तो कुछ शिष्यों के साथ गए, 2 बार गए। And when they arrived there, they saw this beautiful effulgence, this entity that actually flew into his mouth, and he became especially effulgent. तो उनके शिष्यों ने क्या देखा कि एक प्राणी जो बहुत चमक के शरीर से कांति निकल रही थी, वो एक प्राणी के मुख में प्रवेश कर गया और उसके बाद मध्वाचार्य के शरीर की कांति भी फैल गई। And then he told his disciples to stay, and he went farther into the realms of Bhadarikashram. उन्होंने मध्वाचार्य ने शिष्यों को ही रोक दिया और मध्वाचार्य आगे चले गए बद्रिकाश्रम के और अंदर। And he found the cave of Vyasadeva. उनको वहां पर व्यासदेव की गुफा मिली। And Vyasadeva instructed him on all Vedic principles. और व्यासदेव को सभी वैदिक सिद्धांतों पर शिक्षा प्रदान की। And he also met Narayan and Narayan Rishi. और मध्वाचार्य नर और नारायण ऋषि से उनकी भेंट हुई। And Lord Narayan instructed him. और भगवान नारायण ने उनको उपदेश दिया। And then he came back to his disciples, and they returned to South India. तो फिर वो वापस अपने शिष्यों के पास आए और सब मिलकर फिर वापस दक्षिण भारत में आ गए। And then he gave specifically, first he gave 8 disciples sannyas. तो मध्वाचार्य ने फिर अपने शिष्यों में से 8 महत्वपूर्ण शिष्यों को संन्यास दिया। I'm sorry, before that, actually, he was on one pilgrimage to Udupi. He went to the seashore. इससे पहले संन्यास की घटना से पहले एक दिन मध्वाचार्य उडुपी के समुद्र के तट पर गए। And he saw a big ship that was stuck in the sand. And there were hundreds of people trying to move it. But no one could move it 1 inch. And so Madhvacharya, the ship captain was looking at him, this great saintly person, very powerful. He is actually very powerful because he is the incarnation, empowered incarnation of Vayu. The first empowered manifestation of Vayu is Hanumanji. The second is Bhima. And third is Madhvacharya. So he was very powerful. So he simply took his hands and he made the motion like pushing the ship like this, and the ship went out into the ocean. तो मध्वाचार्य ने सिर्फ दूर से एक इशारा किया, जैसे धक्का देते हैं जहाज को, ऐसे धक्का दिया दूर से हवा में और वो जहाज आगे बढ़ गया। So the captain of the ship was so happy. He said, "Please come aboard. Anything you want to take, you can take from my ship." तो कप्तान ने कहा कि आप प्लीज मेरे जहाज पर आइए और आपको जो चीज पसंद है वो आप ले सकते हैं। So he saw one big, not that big piece of gopi chandan. मध्वाचार्य ने एक बहुत बड़ा गोपी चंदन का पत्थर था, बहुत बड़ा। He said, "I will take that." And he said, "Oh, I don't think you can take it because even all of the crew on my ship, they cannot lift it up." तो कप्तान ने कहा मुझे नहीं लगता आप इसको ले पाएंगे क्योंकि मेरे पूरे जहाज में जितनी टीम थी सबने मिलकर भी इसको उठा नहीं पा रहा है। And he said, "But I will take it." I simply grabbed it and picked it up like a bag of cotton. On his way to Udupi, when he sat down, he put it down, some of the chandan broke, and he saw there was a deity of Krishna.
तो जब वो वहां वापस आए, जैसे उन्होंने चंदन का बड़ा पत्थर नीचे रखा जमीन पे, तो उसमें कुछ क्रैक आ गया, उसके अंदर उन्होंने क्या देखा कि बहुत सुंदर विग्रह है भगवान के। So he took the deity to Udupi, and they washed off the deity and saw the beautiful deity of Balakrishna. उन्होंने जब उसको धोया सब किया, तो उसमें से बालकृष्ण रूप में भगवान के विग्रह प्रकट हुए। And actually, that deity was installed in Dwarka by Krishna himself. वो अगर वो जो विग्रह है वो स्वयं कृष्ण ने स्थापित किए थे द्वारका में। And then Arjuna, after Krishna's departure, Arjuna covered the deity in Chandan. तो भगवान के जाने के बाद अर्जुन ने उन विग्रहों को चंदन में लपेट दिया था। And so that deity came from Krishna and from Arjuna to the hands of Madhvacarya. जैसे कृष्ण से विग्रह अर्जुन के पास गए, अर्जुन के बाद अर्जुन कहाँ गए, मध्वाचार्य के हाथ। So this is, so then that after that, he had to establish the worship of the deity, and he initiated his 8 main disciples and gave them sannyas, initiated sannyas. तो अब ये जो भगवान की अर्चना विग्रह की सेवा स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने 8 शिष्यों को संन्यास दिया। And he told them, he said that each one of you will worship the deity for 2 months. तो उनको ये आदेश दिया कि आप में से हर एक व्यक्ति 2-2 महीने के लिए भगवान की सेवा करें। And in this way, the worship should go on eternally. इस तरह से उन्होंने सनातन काल के लिए भगवान की सेवा को स्थापित किया। And then, so this is now, that tradition is still going on. ये परंपरा आज भी वहाँ पर चल रही है। So Madhva, he defeated so many scholars. मध्वाचार्य ने बहुत बड़े-बड़े स्कॉलर्स विद्वानों को हराया। Big Mayavadis, big scholars, Sanskrit scholars, he defeated them all. बड़े-बड़े मायावादी, बड़े-बड़े विद्वान, संस्कृत पंडित सबको हराया। He especially taught the Upanishads. स्पेशली उन्होंने ऋषियों को पढ़ाया। So when he became a very powerful acharya, one day in a dream, Mahaprabhu appeared in his dream. तो जब वो एक महान आचार्य बन गए थे, तो एक दिन उनके सपने में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। And Mahaprabhu told him that I will be appearing in the near future, and therefore I want to give you a specific mission. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं निकट भविष्य में प्रकट होऊंगा और मैं आपको एक स्पेशल मिशन देना चाहता हूँ। Your first mission is that you should fully establish defeating the Mayavad philosophy. तो पहला जो दिया, पहले जो उन इंस्ट्रक्शन दिया चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पहले तुम सिद्धांत स्थापित करो जिससे मायावाद को परास्त किया जा सके। And he said also, you should establish the worship of the Krishna deity as an eternal function of the living entity. तो दूसरा उन्होंने आदेश दिया कि तुम भगवान के अच्छा विग्रह की जो सेवा है, सेवा पूजा है, उसको इस तरह से स्थापित करो कि ये जीव का एक सनातन, जैसे जीवात्मा का एक सनातन अंग हो। And then Mahaprabhu disappeared. फिर चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए। Actually, Mahaprabhu gave 2 missions to each one of the Sampradaya acharyas. तो चैतन्य महाप्रभु ने 4 संप्रदाय के हर एक आचार्य को 2-2 मिशन दिए। And so all these missions were given to these previous acharyas so that Mahaprabhu's movement could flourish when he appeared. तो ये मिशन जो दूसरे आचार्य को दिए गए, उसके दिए गए कि जब चैतन्य महाप्रभु आए उनका मिशन आगे और फलपूरित हो सके। Because the world was so much in Maya, Mahaprabhu had to take these great personalities and give each one of them a particular piece of his mission. तो क्योंकि ये संसार इतना ज्यादा माया से ग्रस्त था कि चैतन्य महाप्रभु को इन सभी आचार्यों को अपने मिशन का कुछ हिस्सा उनको दिया। So then Madhvacarya decided that he would again go to Bhadarikashram. तो मध्वाचार्य ने निर्णय लिया कि वो दोबारा से बद्रिकाश्रम जाएंगे। So he came to the Ganga, and there were 2 kingdoms on either side. One was a Hindu kingdom, and the other was a Muslim kingdom. तो
तो वो एक स्थान पर पहुंचे गंगा के तट पर, उन्होंने देखा गंगा के नदी के एक तरफ मुस्लिम देश था और एक तरफ हिंदू देश। And because they were opposed to each other, there were no boats available to cross the river. क्योंकि वो दोनों राज्य एक दूसरे के शत्रु थे, तो इसलिए वहां कोई नाव नहीं थी पार करने के लिए। So Madhvacarya, he had some disciples with him. He told them with one hand, he told them, hold on to me. And with the other hand, he swam across the Ganga, just with one hand. And also in record time, with one hand. He was so powerful. And then the Muslim king, when he came out, they thought, here's some intruders. They're coming from the Hindu side. But the Muslim king, when he saw the effulgence of Madhvacharya and his beauty, he said, anything you want. I'll give you half of my kingdom. And he said, no, I don't want that. I just want to serve the Lord. So he proceeded and he went back to Badrikashram. And then again, he was instructed by Vyasadeva, especially on the Mahabharata. Then he wrote the Mahabharata, what is it called? Mahabharata Tatpurna Ninaya, where he points out some stories in the Mahabharata which are not actually part of the Mahabharata. Mahabharata Tatpurna Nirnaya. And so even many of the versions of Mahabharata that we have nowadays are a little bit corrupted. Some stories are not actually part of the original Mahabharata. Just like in very popular Mahabharatas, the story of Parikshit Maharaj is told that he was hiding in a tree because he didn't want to get poisoned. तो एक महाभारत जो आजकल है उसमें बताता है कि महाराज परीक्षित पेड़ के ऊपर छुप रहे थे, छुपे हुए थे क्योंकि वो and every time they brought him some food, he would have somebody taste it. जब वो घबराकर पेड़ पे छुपे हुए थे, जब भी उनके लिए कुछ खाना लेकर आता था, पहले तो व्यक्ति टेस्ट करता था, उसको खाता था, फिर कुछ महाराज देते थे. And therefore Bhaktivinoda Thakur says, only Bhagavad Gita and Srimad Bhagwatam are the pure Shastras. Pure Shastras. इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि सिर्फ भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम ही एक शुद्ध शास्त्र है. And all the other Shastras, we must see them in the light of the Bhagavatam. Even the Puranas, whatever, we see them in the light of the Bhagavatam. और दूसरे जितने भी पुराण हैं और सब हैं शास्त्र हैं, उनको सभी को हमें श्रीमद् भागवतम के संदर्भ में देखना चाहिए. And this is why Narada Muni, or Krishna created the pastime of Narada Muni instructing Vyasadeva. He had already done a version, but Vyasadeva had already spoken and written a version of the Srimad Bhagavatam, but it was devoid of, it didn't have enough Krishna bhakti. तो इससे पहले भी व्यासदेव सभी ग्रंथों को लिख चुके थे, लेकिन सब में कृष्ण भक्ति नहीं थी. So therefore, by Sri Narada Muni's instruction, Vyasadeva completed the perfect Bhagavatam, which becomes the basis for all scriptural knowledge in Kali Yuga. तो नारद मुनि के आदेश पर व्यासदेव ने एक पूर्ण रूप से जो भागवतम हमें दी है, जो सभी शास्त्रों का निचोड़ है और Okay. We became the basis of all scriptural knowledge for Kali Yuga. और जितने भी शास्त्रों का आधार बना कलयुग में
ज्ञान प्राप्त करने के लिए। So these are just some of the accomplishments. One time Madhvacarya was one very strong man. He was known as the strongest man in the whole region. So he challenged Ramanuja, said, let us wrestle. I'm going to show you I'm stronger than you. तो उस समय एक उस स्थान का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था पैरमन टाइप, उसने मध्वाचार्य को चैलेंज किया युद्ध के लिए। And so Madhvacarya put his toe on the ground. He said, I will accept your challenge if you can lift my toe. तो अपने पैर की उंगली को मध्वाचार्य ने जमीन पर लगा दिया कि मैं तुम्हारा चैलेंज तब स्वीकार करूंगा कि मेरी उंगली उठा कर दिखाओ। And the man laughed. He grabbed his toe. Oh, he couldn't move it one centimeter. तो वो व्यक्ति हंसने लग गया और उसने कोशिश की और वो एक सेंटीमीटर भी हिला नहीं पाया। So Madhvacarya, he had all these powers and all this ability to bring Krishna Bhakti to the forefront. तो चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के अंदर वो सब शक्ति थी जिससे वो कृष्ण भक्ति को एकदम आगे ले जाते थे। हाँ। He left this world after 79 years old. तो जब उन्होंने इस धराधाम से वापस गए तो उस समय वो 79 साल के थे, 79। Although he was still very powerful, it's not like he was an old man and just ready to leave this world. ऐसा नहीं था उस समय बुढ़ापे के शिकार थे, बहुत बुजुर्ग हो गए थे, तब भी वो एकदम बहुत शक्तिशाली थे। We see this that Madhvacharya, Ramanujacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Shankaracharya, they all left this world by their own will. अब ये देख सकते हैं मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य हो, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, ये सब अपने अपनी इच्छा से इस पृथ्वी को छोड़ा है। Just like we see with Bhishma Dev, he was full of arrows, but he didn't want to leave until he got darshan of Krishna. तो देख सकते हैं भीष्म देव को सब जगह तीर लगे हुए थे, शैया पर थे, लेकिन भगवान के दर्शन किए बिना वो शरीर नहीं छोड़ना चाहते। So Srila Prabhupada explains there that a pure devotee, a Mahabhagavata, decides when they want to leave. श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखते हैं कि महाभागवत जो है वो ये निर्णय कर सकते हैं कब वो शरीर छोड़ना चाहते हैं। Of course, sometimes Krishna may change their plan. हो सकता है कृष्ण कभी उनके प्लान को चेंज भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। But this is all done by Yoga Maya, not by Mahamaya. ये सब कुछ योग माया के द्वारा किया जाता है, ना कि महामाया द्वारा। Not like us, that we become old and decrepit and then sometime we leave, or maybe we're young and we leave. We don't know. जब जब बूढ़े हो जाते हैं तो बिल्कुल एकदम से कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं या फिर जवानी में भी शरीर छोड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। So therefore, we have to take advantage of the association of great Vaishnavas. इसलिए हमें महान आचार्यों की संगति का लाभ उठाना चाहिए। That means we try to offer some service, but the most important service is to hear from them. तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सेवा है कि उनसे श्रवण करना। Because the whole basis of parampara is hearing. क्योंकि पूरे जो परंपरा का आधार है वो क्या है? श्रवण। If we're not willing to hear, then how can we represent our parampara? अगर हम श्रवण करने के लिए आतुर नहीं है तो हम अपनी परंपरा का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं? Every one of us has that duty to represent the parampara by the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu. हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपनी परंपरा का प्रतिनिधित्व करें महाप्रभु की आज्ञा से। Not that there's one guru and everybody else is a follower. No. ऐसा नहीं कि एक ही गुरु है, बाकी सब शिष्य हैं। Srila Prabhupada said that guru is not a person, guru is a principle. तो प्रभुपाद कहते हैं गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक सिद्धांत है। Guru is an eternal truth that descends and expands by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Sri Radha and Krishna. गुरु वो परम सत्य हैं जो इस धाम पर प्रकट होते हैं और अपने आप को विस्तार करते हैं। गुरु श्री कृष्ण की कृपा से कृपा का प्रचार करने के लिए। So Sri Chaitanya Mahaprabhu chose to come in the line of Madhvacharya. तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट हुए मध्वाचार्य की परंपरा में। And he has declared
before Haridas Thakur that everyone will be saved within the universe. तो उन्होंने हरिदास ठाकुर के सामने घोषणा की चैतन्य महाप्रभु के इस ब्रह्मांड में सभी को बचा लिया जाएगा। But he didn't do that personally. और उन्होंने ऐसा किया नहीं। Because he wanted us to have that opportunity to participate in his Leela. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सबको अवसर देना चाहते हैं उनकी लीला में भाग ले सकें। So being in this Krishna consciousness movement is the greatest privilege that we can possibly receive. चैतन्य महाप्रभु इस हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ना ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। If we strictly follow the teachings of Mahaprabhu descending through our parampara and especially through Srila Prabhupada, we can actually enter into Chaitanya Leela. तो अगर हम इस परंपरा में जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है और श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से जो शिक्षा मिल रही है उसको पालन करें तो हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रवेश कर सकते हैं। Chaitanya Leela is audarya. It is full of compassion and mercy. तो चैतन्य महाप्रभु की औदार्य लीला है पूर्ण रूप से कृपा से भरी हुई। So Prabhupada said, to become guru, not such a big thing, just strictly follow. तो प्रभुपाद के गुरु बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बस strictly follow, मतलब दृढ़ता से पालन करो। And this is the instruction of Krishna, और ये भगवान का भी उद्देश्य है that one must be dridha vrata, very determined. व्यक्ति को दृढ़ व्रत होना चाहिए। So we have to, we just have to take advantage of this movement by following Srila Prabhupada's instructions, and not mechanically, but within the heart. हम सबको लाभ उठाना चाहिए श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन का पालन करते हुए, मैकेनिकली बाहर से नहीं, अंदर पूरे उसके साथ। In the beginning, there has to be some mechanical following. शुरू में कुछ हो सकता है कि यांत्रिक रूप से आप फॉलो कर रहे हैं कुछ। But we have to chant very sincerely so that our chanting will become pure, and then our heart will become, then Krishna will manifest in our heart because we have cleansed it properly. तो हमें हरे कृष्ण नाम को जब को बहुत गंभीरता से करना चाहिए कि इससे धीरे-धीरे हमारा जो हृदय है वो शुद्ध हो और श्री कृष्ण उसमें प्रकट हो। This is everyone's duty. ये सभी का कर्तव्य है। Anyone who's here, you have to do this. No. जो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है सबको ये करना है। Oh, this is Mahaprabhu's trick. No. ये चैतन्य महाप्रभु की। One time, Srila Prabhupada said that Krishna is just like a fisherman. No. प्रभुपाद वो बोलते हैं कि जो श्री कृष्ण है मछुआरे की तरह है। He gets you with his hook, no, तो अपने हुक पर फंसा लेते हैं and he will pull you to his lotus feet. No. तो अपने चरण कमलों के प्रति आप खींचते हैं। But we should not give Krishna so much trouble. No, like some people, they're fishing, they get big fish, they're struggling so hard. No. तो हमें लेकिन भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए। आपने देखा होगा कि लोग जब ऐसे मछली पकड़ते हैं तो बड़ी मछली होती है तो बहुत जोर लगाना पड़ता है खींचने के लिए। So we should not be like a big shark or something, fighting so much. You know. हमें बड़ी शार्क मछली बना कि हम लड़ रहे हैं भगवान के प्रति जाने के लिए लड़ रहे हैं नहीं जाना। We should become like swans and just go toward Krishna's lotus feet. You know. हमें क्या बनना है? हंस बनना है कि भगवान के चरण कमलों के प्रति अपने आप उतर जाना। Don't give Mahaprabhu trouble trying to bring you. You know. चैतन्य महाप्रभु हमें कोई कष्ट नहीं देना कि उनको पकड़ के हमें ले जाना पड़े। Don't hamper Srila Prabhupada's mission by resisting what his mercy. तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को रोककर। And if we're very serious, then as Srila Prabhupada and our parampara promises, we will become blissful in Krishna consciousness. और अगर हम इस चीज को लेकर गंभीर हैं तो हम इस चीजों का पालन करके हम आनंदमय हो सकते हैं। So these are some thoughts on this verse and on Srila Madhvacarya. तो ये मेरे कुछ विचार हैं इस श्लोक पर और मध्वाचार्य पर। Thank you all very much. Is there any question or comment? धन्यवाद करता हूँ कि कोई प्रश्न है, कुछ टिप्पणी है। आप हिंदी में प्रश्न पूछ सकते हैं, अभी ट्रांसलेट करेंगे अगर आपको लग रहा है।
धन्यवाद महाराज जी, अच्छे से मतलब बताने के लिए मतलब चालू हुआ है। और जैसे आपने बताया कि मैं भगवान के तरफ आगे बढ़ना है, ऐसे शुद्ध भक्तों की तरफ आगे बढ़ना है, तो उसको हम कैसे इंटेंसिफाई कर सकते हैं या कैसे उसको बढ़ा सकते हैं कि हमारी जो गति है वो भगवान के भक्तों की तरफ तेजी से आगे। He said, as you said in the lecture, that we should move forward towards the great devotees and towards the Lord. What should we do to intensify that speed, moving forward towards the devotees and the Lord? Chant more. And chant sincerely. There should be both quality and quantity. Quality भी होना चाहिए, quantity means. One time a devotee asked Srila Prabhupada, how can I chant my 16 rounds with quality? एक बार एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि मैं अपनी 16 माला अच्छी क्वालिटी वाली 16 माला कैसे कर सकता हूँ? And Prabhupada said 16 rounds means no quality. प्रभुपाद ने कहा 16 माला मतलब कोई क्वालिटी नहीं. If you have quality, you cannot stop chanting. अगर क्वालिटी है तो इसका मतलब आप जब कमी होगी नहीं. So we want to chant very nicely and we want to chant as much as possible. And we can understand if I'm chanting properly, I won't want to stop. I won't think, oh, I finished, you know. तो अगर मैं अच्छे से जप करूंगा तो उसका लक्षण क्या है कि मैं जप को रोकना नहीं चाहूंगा कभी. नहीं तो फिर ऐसे होता है कि हम एक बार माला पर रखते हो गया जप हो गया. In 1967, Srila Prabhupada said, just chant, 68, just chant your rounds and then you can do anything you want. श्रील प्रभुपाद ने 1968 में क्या बोला कि अपना जप करें और फिर आप कुछ भी कर सकते हैं. But that's because the devotees were all previous hippies, drug users, so just to get them to chant was a very great difficulty, you know. क्योंकि वो जो उस समय जो जुड़े हुए थे लोग पहले हिप्पीज थे, ड्रग्स लेते थे, उनको सिर्फ जप करवाने के लिए प्रभुपाद ने ऐसा किया. Now we have a very special place, especially here in India. Even Madhvacarya said that anyone who is born in Bharat, that they have a very special opportunity for Krishna consciousness. And Chaitanya Mahaprabhu said the same thing. तो अभी हम देख सकते हैं कि भारत भूमि में मध्वाचार्य भी कहते हैं कि जो वहाँ के फॉलो हैं कि भारत भूमि में जन्म लेना एक बहुत सौभाग्य की बात है और जिस तरह हम पहले बोल चुके हैं. Srila Prabhupada, when he would preach to Indian audiences, wherever he was, whether in India or other places, he said, you have this responsibility, you must do it. No. श्रील प्रभुपाद ने जब भारत में भी या कहीं पे भी प्रचार किया तो प्रभुपाद ने हमेशा बोलते थे ये आपका कर्तव्य है. Actually, all of you should become qualified, then you can go to the West and teach all these fallen conditioned souls how to become Krishna conscious. तो आप सब अपने आप को योग्य बनाइए और पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार कीजिए कि लोग कैसे भक्त बना सकते हैं. But unfortunately, by the mercy of cell phones and internet, the Indian people are becoming influenced by the West. लेकिन सेल फोन और इंटरनेट की कृपा के माध्यम से जो भारतीय लोग हैं वो पाश्चात्य संस्कृति
Were we demigods, Prabhupada? Oh, they're actually, they look like Americans, no? So I listened for some time, then I went to my apartment, and then Vishnu Jan Swami came to my apartment. He gave me a Back to Godhead magazine. I said, thank you. And he said, oh, you should give a donation. So I said, oh, maybe I can give you 50 cents, no? Half of $1, one half of $1. He said, this knowledge is invaluable. There's no amount of money that you can give that will even compensate one drop for what you're getting. And I said, so how much do you want? He said, how much do you have? I said, I have $5. He said, okay. So I gave it. So then I read the magazine, but shortly afterwards, I got drafted into the army. I was miserable. So I went to the library looking for some book, give me some knowledge. And I found the old blue version of Bhagavad Gita, Macmillan, first version. I was already practicing yoga from Paramahansa Yogananda. But then I had this little useless Bhagavad Gita, and I had Prabhupada's Bhagavad Gita. And as soon as I read 2 pages of Bhagavad Gita, I took the other Bhagavad Gita and gave it away. And I read the whole Gita. It took me like 20 hours. I sat down, I read the whole thing. Immediately, I took the address of the devotees. I said, please tell me more. And they sent me japa and books and everything, because I was in another country. I was in Panama. Then the devotees, some devotees came to Panama to preach to the Indian community there. Panama, and and I met the devotees, and they took away all of my impersonal conceptions. Of course, I was already convinced, but I had some, some remnants of Mayavad still in the mind. So then when I got out of the army, devotees
they just started a temple in the next country, Costa Rica. They said, now you can go to India. Temple president said, you can go to India, and when you come back, you can do Sankirtan. No. तो फिर जब मैं आर्मी से बाहर आया तो फिर उन्होंने जो दूसरा देश है कोस्टा रिका वहाँ पर प्रचार करना शुरू किया और वहाँ के प्रेसिडेंट ने मुझे बोला कि तुम अब इंडिया जाओ वहाँ संकीर्तन करो वहाँ से Go to India and then you can come back. He said you can go with me and then come back. Just one detail. No. One detail. You collect for my ticket and your ticket. So I joined Radha Damodar party. And I collected for our tickets. No? And then we went to Mayapur. No? And of course, at that time, there was only the Lotus building, which wasn't even finished. Almost everyone had to sleep outside in tents in the walls. But I was fortunate that my temple president was a very older, very senior devotee. And so I was staying with him very close to Prabhupada's room. Then Prabhupada's secretary said, does anyone know how to type? And I said, I do. So he said, okay, you come here. You'll stay right here outside of Prabhupada's room. And whatever we need to type that we cannot do, you can do. So there were 6 devotees taking sannyas. And so they gave me sannyas mantra, said, you type this 6 times. So I guess when I was typing it, a little bit rubbed off on me. No? And then I was able to go and I would see Srila Prabhupada preaching to the leaders. At that time, practically no one could come and see Prabhupada, only the leaders. No. तो मैं थोड़ा सा देख पा रहा था दरवाजे से प्रॉपर सीनियर लीडर्स को प्रचार कर रहे थे और उसमें ऐसे कोई भी प्रॉपर के कमरे में जाके नहीं मिल सकता था सिर्फ लीडर्स ही मिल सकते थे I asked if I could see Prabhupada and they said no, probably not. तो मैंने जब पूछा कि मैं प्रॉपर से मिलना चाहता हूं लेकिन नहीं संभव नहीं है But one day Brahmananda said, oh, Prabhupada's very peaceful now. If you like, you can see him. एक दिन बाबा प्रभु ने बोला कि प्रॉपर बहुत आपसे इतना फ्री है अगर मिलना चाहते हो मिल सकते हो So I went in and but I was so overcome by Prabhupada's presence that my mind went blank. I had all these questions, but they went blank. I couldn't think of anything. So Prabhupada said, so, what is your service? I said, Sankirtan, Prabhupada. He said, then you do that all your life. I said, I offer my obeisance, thank you, Prabhupada. So then we went to Vrindavan and I got initiated there in Vrindavan. And then we did some programs in Delhi, and I went with Srila Prabhupada. I mean, only because my temple president, he was very senior devotee. So one very nice instruction Prabhupada gave us, we were taking prasadam, and after prasadam we took our leaf plates and gave it to the cows, because cows were coming. And whenever we would eat, cows would come. तो एक महत्वपूर्ण उपदेश प्रभुपाद ने दिया जब हम प्रसाद पाते थे तो प्रसाद पाने के बाद अपनी जो पत्तल थी उसको फोड़ करके हम गायों को खिलाते थे तो गाय वहां आ जाती थी जब प्रसाद पाते थे Prabhupada was on the roof. This is when there was only one house in Delhi, just one house, wasn't even a temple. उस समय मंदिर नहीं था दिल्ली में छोटे घर ही था
और प्रभुपाद इस वक्त छत पे खड़े थे। So he called us up to the roof. प्रभुपाद ने हम सबको छत पे बुलाया। And he said, so you do not give remnants to your mother. प्रभुपाद ने कहा कि अपनी माता को अपना उच्चिष्ट मत If at first you feed your mother, then you take the remnant. पहले अपनी माता को खिलाइए, फिर उनका उच्चिष्ट लीजिए। So we understood how special the cow is. No, she's our mother. तो उससे हमें समझ आया कि जो गाय कितनी महत्वपूर्ण है, जो हमारी माता है। So then we all bought bananas, and first thing we did was feed the cows. Then we took prasad. फिर हम आगे से फिर केले लेके आते थे, पहले वो गाय को खिलाते थे, फिर उसके बाद प्रसाद लेते थे। Anyway, that was how I met Prabhupada. तो इस तरह से प्रभुपाद को खिलाया। Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे ही बताया था कि हमें मतलब ये हमारे ऊपर वैली करता है कि हम बिलगेट्स को फॉलो करें या फिर श्रीला प्रभुपाद को फॉलो करें, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बिलगेट्स श्रीला प्रभुपाद जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें? He's asking that in your lecture you said it's up to us, we should follow Bill Gates or we should follow Chaitanya Mahaprabhu. Yes. So is there any way that Bill Gates start following Srila Prabhupada? When he does, then we will follow him. अगर Bill Gates ऐसा करेगा तो हम Bill Gates को follow करेंगे, he follows Prabhupada. But better we show him who he should follow. उससे बेहतर ये है कि हम Bill Gates को बताएं कि उसको किसको follow करना चाहिए. Don't wait for him to, because he may take a long time. Don't wait for him to come to Prabhupada because he may take a long time. तो उसकी Bill Gates का इंतजार ना करें क्योंकि वो बहुत टाइम ले सकता है प्रभुपाद के पास आने तक के लिए. Better we show him the pathway. बेटर हम उसको जाके बताएं कि सही रास्ता क्या है. माता जी पीछे माइक पास करो. Hare Krishna. In this Kaliyug era, how can we identify who is genuine, pure, or true devotee, and who is capable of offering the accurate guidance? Right? Because sometimes what is visible is not real, and sometimes what is not visible is real. We can't see that. And then how can we establish trust with that? We know, you can say it in Hindi. माता जी का प्रश्न है कि इस आज के समाज में ये कैसे पता लगेगा कौन सा एक जैन भक्त है कौन सा नहीं है, क्योंकि कई बार दिखता है होता नहीं तो होता है दिखता नहीं, तो कैसे हम एक सही मार्गदर्शन ले सकते हैं. So we know that Srila Prabhupada is a Mahabhagavata. हमें इतना तो पता है कि श्रील प्रभुपाद महाभागवत. So anyone who strictly follows Srila Prabhupada, then that person is a pure devotee. तो अगर कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी को पूरी तरह से उनकी शिक्षाओं का पालन करता है तो वो व्यक्ति भी श्रील प्रभुपाद. Actually, any devotee, when they're following strictly whoever is instructing them, whether it be temple president, guru, whoever, when they're actually following, then they are pure devotees at that moment, but it may be temporary. अगर कोई व्यक्ति कोई भक्त जो है अपने टेंपल प्रेसिडेंट कोई भी अथॉरिटी को 100% फॉलो करता है तो वो भी शुद्ध भक्त है, लेकिन कुछ समय के लिए. So how do we if we want to understand if someone is a pure devotee, then we take the time to observe them. This is the instruction of Mahaprabhu to Sanatana Goswami. तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि शुद्ध भक्त है या नहीं, उसके लिए भी थोड़ा समय लगता है, हमें उनको उनका आचरण देखना होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं. You don't just accept someone because they have a position. हम किसी को इसीलिए नहीं मान लेते हैं क्योंकि उनका कोई पद प्रतिष्ठा है समाज में. You accept them according to their guna and their charita. तो हम किसी को कैसे एक्सेप्ट करते हैं उसके गुण और उसके चरित्र के आधार पर. Prabhupada said, you can understand, you can identify a fool when they speak.
No. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मूर्ख का पता लगता है जब वो बोलने लगता है। So we have to read Srila Prabhupada's books to understand who is speaking properly and who is not. No. तो हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को अध्ययन करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कौन श्रील प्रभुपाद की सच्चाई को यथार्थ बोल रहा है कौन नहीं। No. So we should not be so anxious, especially when one wants to take initiation. One should be not so anxious. One should make sure that the person that I want to follow, however long it takes, Prabhupada took 11 years, no, however long it takes, you make sure that I will be able to follow this person. तो हमें दीक्षा लेने के लिए बहुत जल्दी आतुर नहीं हो जाना चाहिए। हमें व्यक्ति को जिससे देखिए प्रभुपाद ने 11 साल लिए, हमें अच्छे से सोच समझकर देखकर व्यक्ति को फिर ग्रहण करनी चाहिए। Just like Prabhupada said, one could be initiated after 1 year. जैसे प्रभुपाद ने कहा कि एक व्यक्ति 1 साल के बाद दीक्षा ले सकता है। But that's when everybody lived in the ashram. वो उस समय सब लोग आश्रम में ही रह रहे थे। So you were doing devotional service from 4 in the morning to 10 at night. No? उस समय सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भक्ति कार्य चल रहे थे। Now that most devotees come from congregation, better to take a little more time. अभी ज़्यादातर जो भक्त कांग्रेगेशन में हैं तो बेटर कि हम थोड़ा समय लें। Because you're forced to do so many activities, education, work, etc., family. No? क्या कई चीजों में लगे होते हैं, एजुकेशन है, नौकरी है, घर है। So make sure in the midst of all those activities that I will always be able to chant my minimum 16 rounds and follow the principles nicely. तो इन्हीं सभी द्वंद्वों के बीच में हमें श्योर करना चाहिए कि अपनी 16 माला का जब को 4 दिन को पालन करूंगा। I got when you said that if you follow temple authority, you are pure devotee for some time. Yeah, as long as you're strictly following, at that moment you're actually doing pure devotional service. So I think we've gone long enough. If anyone else has a specific question, they can come and I can answer it. No. Thank you all very much for your kind attention. धन्यवाद करते हैं।